हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज के एक नए वीडियो में। माय नेम इज राजा जैन एंड वी आर बैक विद another video of chart express series. We could not continue with our previous videos because there was some issue in my laptop, because of which we could not make new videos, but again we are back now and let us start today's session. So first of all, we'll check the time. So currently the time is 8 o'clock and today's date is 5th of December. So without wasting further time, let us quickly move on to the chart of Nifty, which you can see in my screen, on my screen. So here we can see कि यहाँ पे निफ्टी में एक काफी अच्छी फॉल आई ड्यू टू द कोविड, द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, that variant, and still it is not yet clear how much that variant is harmful. So because of that, there is no clarity on the chart of Nifty movement, and it might be possible कि हमें यहाँ से और भी एक फॉल, मतलब ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रह सकती है. सो दिस इज द लेवल जो आप देख रहे हैं 17,368 का, जो हमने पहले काफी बार ये ड्रॉ करके रखा था. तो यहीं से एक लगभग यहीं से हमें एक वापस से निफ्टी में रिवर्सल दिख रहा है. एंड इट माइट बी पॉसिबल, अगर ये वेरिएंट जो है, अगर ये ज्यादा हार्मफुल हुआ, जो कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अगर ये ज्यादा हार्मफुल निकल आता है देन इट माइट बी पॉसिबल कि निफ्टी यहाँ से और नीचे के लेवल दिखाए एंड 16,700 एंड 16,500 ये लेवल्स है जहाँ पे निफ्टी आ सकता है. बट ऑन द अदर साइड, इफ the result of the Omicron virus variant, ये अगर harmful नहीं रहता है, नंबर ऑफ डेथ्स अगर इसमें नहीं होते हैं ज्यादा, देन पॉसिबली यहाँ से हमें एक रिवर्सल दिखेगा. रिवर्सल एज इन यहाँ से और एक अप ट्रेंड दिख सकता है एंड इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से जो फॉल है वो एक बार के लिए थम जाए. सो दिस इज द like this is my view on Nifty. I'll still be watchful and चलते हैं बैंक निफ्टी में. So on the bank Nifty, in short term analysis, bank Nifty is looking extremely weak. यहाँ आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद में यहाँ से कंटिन्यूअस डाउनफॉल चल रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट में, विच इज नॉट गुड. एंड ये जो वीकली रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है 36,900 की, एग्जैक्टली यहीं से एक रिवर्सल दिख रहा है. एंड वी हैव सीन अ रेड कैंडल ऑन फ्राइडे, नेगेटिव में क्लोज हुआ था मार्केट. सो जैसे निफ्टी में था, इन द सेम वे वी हैव इन द बैंक निफ्टी एज वेल, विच इज शोइंग रिवर्सल. एंड इट माइट बी पॉसिबल कि अगर जो न्यू वायरस के जो केसेस है अगर वो ज्यादा आते हैं एंड नंबर ऑफ डेथ्स उसमें ज्यादा रहती है, देन और हमें इसमें मार्केट में गिरावट दिख सकती है. सो फॉर द टाइम बिंग इट इज लाइक अभी भी थोड़ा कॉशियस मोड ही चल रहा है एंड इट्स बेटर टू स्टे अवे till the time we get better clarity on Nifty and Bank Nifty. But from stocks point of view, there are quite a few good stocks जो हमारे पास है, and which even in the bad market they are showing good strength and they are ready for some kind of breakout as well. So let us go to the list of shares. First is Vodafone Idea. इसकी कहानी ऑलमोस्ट सबको पता है अब, but there is something new and something interesting that has happened in the last week in Vodafone Idea's chart. You can see here, ये जो मैंने blue color की जो line mark की है, the level is 13.55 rupees. It has tested this level quite a few times, but it has successfully crossed this level on Friday. So it gave a closing. This is indicating a very strong momentum. एक बहुत बड़े down range consolidation से बाहर आ रहा है, and this is giving an indication that something very big and positive is about to happen in Vodafone Idea. The way it has given the closing and the pattern which it has formed here, this is called inverse head and shoulder pattern. It is considered a very strong and bullish pattern, and if we consider this, यहाँ से हमें टारगेट जो मिल सकते हैं, that would be almost 20 rupees के इसमें टारगेट हमें easily देखने मिल सकते हैं.
So this would be the first target, and we'll wait and watch. We'll try to see if some positive news comes out for this particular company. Based on that, it will be decided कि इसका आगे future क्या रह सकता है. But for trading point of view, we can definitely trade this stock. I have my personal entry into this stock at around 12.8 levels. So यहाँ पे मैंने entry किया था, and I'm holding pretty good quantity of stocks in this particular stock. So you can trade into this stock with a target of approximately 20 rupees. The next one that we have is CDSL. Along with CDSL, there is one more company, that is BSC. So there is a story which is going behind these two companies. The story is NSE IPO. There are rumors and there is news that NSE IPO is about to come, and it is getting valued at around 2 lakh crore rupees. And the story of BSC is like NSE is similar to BSC. The businesses are same. And if one company is getting such higher valuation, that is 2 lakh crores, and on the other side, if you see BSC, the valuation of BSC is approximately 8,000 crores at the current market price. So there is a huge potential that I see, and so many people would be definitely applying for the IPO in NSE, which will come in after a few days or few weeks. Then I have a strong and gut feeling that BSC could be played as a proxy play. So keeping that in mind, BSC should give a good move till the time we see NSE IPO in the market. And along with this, if BSC runs, then definitely CDSL will also run, because CDSL holds a pretty good quantity of position in BSC. So the same thing is visible in chart as well. CDSL का चार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, it is giving a clear indication of ascending triangle pattern and 1555. You can say 1555 or 1550, or you can, to be on the safer side, you can consider 1580 as well. This is the level. If it crosses it, then definitely you can enter into this stock for trading purpose. एंड थोड़ा सा आपको 3 to 5 months के अराउंड का आपको नजरिया रखना होगा, एंड डेफिनेटली यू कैन सी 2000 के लेवल्स इन दिस स्टॉक. And to be very frank, I have already a pretty good quantity of position into this stock, and मेरी entry लगभग 1400 के around है. So I am pretty much, मेरा already 10% के ऊपर का इसमें profit चल रहा है, and I am holding it till the time NSE IPO comes. So I am not selling it for now. The next is BSC. BSC में मेरी entry काफी नीचे levels पे है, and you can see here, यहाँ पे भी same ascending triangle pattern बना. It gave a breakout, retested the level, and then gave a very good breakout, very good movement as well. So I am still not selling it, and इसमें मेरी entry है लगभग 1270 rupees पे. So it is already almost 45% up from my buying levels, and I might not I'll not be surprised if I see it at 3000 plus or 4000 levels. So that is my target for which I'll be holding this particular stock. तो चलते हैं next company में. Next is Gujarat Gas. So in Gujarat Gas, you can see यहाँ पे एक short term downfall आया था, उसके बाद में it is into the consolidation zone, and now this level 687 का जो level है, if it crosses this level successfully, then we can see a very quick move till 780 rupees. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक inverse ascending triangle pattern का भी एक formation बन रहा है, जिसके breakout के लिए ये almost ready है. So once it gives a closing above 687, then you can enter into the stock, and आप इसके लिए 780 rupees के लिए easily इसमें trade कर सकते हैं. The next one that we have is Persistent Systems. So in Persistent Systems, you can see I have drawn two zones, and ये इसी zone में consolidate कर रहा है.
यहाँ पे आके नीचे फॉल आए, नीचे फॉल आने के बाद में अगेन इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज एज वेल, range only. And last week we have seen that it has given the breakout of this zone and it has given a small green candle, a red candle. So if it gives a reversal in the coming week, if it gives a reversal from this level, then we can definitely enter into this trade, and यहाँ पे approximately 10-15% की move हम इसमें expect कर सकते हैं. That would be the target for persistent systems. The next is green panel. So in green panel industries आप देख सकते हैं कि this is the daily chart, and यहाँ पे एक short term fall आने के बाद में it is consolidating. So once it comes out of this consolidation, then you can enter, and enter करने के बाद में यहाँ पे जो level that you would be seeing is first target would be 420, and उसके ऊपर में आप देख सकते हैं approximately 450-475 के levels इसमें दिख सकते हैं if you keep it for a slightly longer period of time. Provided all these targets which I am giving, this would become true provided the COVID fall, जो COVID के cases है, if it gets stabilized, and जो fear है COVID का due to Omicron variant, अगर वो neutralize हो जाता है, then definitely movement काफी अच्छी हमें दिख सकते हैं in Nifty and Bank Nifty. The next one that we have is Thermax. तो इन थर्मैक्स, ये डेली चार्ट है थर्मैक्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट 1536 लेवल्स यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, एंड उसके बाद में एक स्मॉल करेक्शन लाइक साइडवेज कंसोलिडेशन यू कैन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन में ये भी ट्रेड कर रहा है, एंड if it gives a successful closing above 1798, you can roughly consider it as 1800. इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है, then we can quickly, like we can trade it for a quick 10% move, approximately 2000 के levels हमें बहुत जल्दी दिख सकते हैं. So this would be another trade for us. So that's it we have for this time. Take good care of yourself and keep trading. Tada.